Hello student, welcome to all PCM classes. Today's session is properties of rational number. And in this topic we will explain addition of rational number, multiplication of rational number, properties of addition and multiplication of rational number. This is the second part of rational number. So operation on a rational number, addition of rational number. There are two possibilities of addition of rational number. मीन्स रेशनल नंबर को ऐड करने की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. नंबर फर्स्ट, इफ़ द गिवन रेशनल नंबर हैव सेम डेनोमिनेटर, देन वी ऐड द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विदाउट चेंजिंग द डेनोमिनेटर. मीन्स जब हमें कोई दो रेशनल नंबर दिए होते हैं और उनका डेनोमिनेटर सेम होता है, तब हम विदाउट चेंजिंग द डेनोमिनेटर मीन्स डेनोमिनेटर को बिना चेंज किए न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं. फॉर एन एग्जांपल 5/17 प्लस 8/17 इक्वल टू 5 प्लस 8/17. Denominator is same. There is a 17 and this one is also 17, not a 34. हम इस केस में डेनोमिनेटर ऐड नहीं करते हैं, ओनली न्यूमरेटर ऐड करते हैं. सो 8 + 13 इक्वल टू 8 + 5 इक्वल टू 13. सम अदर एग्जांपल 2/3 प्लस 4/3 इक्वल टू 2 + 4/3 equal to 6/3. This is your answer. And और सॉल्व करोगे सो 2 because 2 3 2s are 6. Next one is if the given रेशनल नंबर हैव अ डिफरेंट डिनोमिनेटर. अगर दिए गए नंबर जो है रेशनल नंबर उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, देन वी रिड्यूस इनटू देन द कॉमन डिनोमिनेटर. और हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते हैं कॉमन डिनोमिनेटर बना के बाय यूजिंग अ एलसीएम मेथड. देन वी ऐड डिनोमिनेटर और उसके बाद हम ऐड करते हैं. फॉर एन एग्जांपल 1/4 प्लस 2/3. द एलसीएम ऑफ 4 3 equal to 12 is a LCM. So we have to change the denominator in 12. So हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को चेंज करेंगे 12 में. जो हमारा एलसीएम आता है डेनोमिनेटर को उस फॉर्म का बनाना है हमने. नेक्स्ट, सो वी डिवाइड 12/4. 12 को 4 से डिवाइड करेंगे and the answer will be 3. So this 3 is multiply numerator as well as denominator. Similarly 12 divided by 3 and we get 4. Then we multiply 4 numerator as well as denominator of this rational number. Then we get 3/12 and 8/12. So the denominator is same. Then further the step first. Next is the properties of rational number. This is the properties of rational number, whole number and integer I or Z.
ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में रेशनल नंबर की, होल नंबर की एंड इंटीजर की. Number 1 is closure. What do you mean by closure? The sum of any two rational number, whole number and integer is also a rational number, whole number and integer. Means किसी भी दो नंबर का, किसी भी दो रेशनल नंबर, होल नंबर एज वेल एज इंटीजर्स का सम ऑलवेज इंटीजर होता है. सॉरी. सो 2 plus 8 equal to 10. 2 and 8 are also rational number, whole number and integer. The sum is 10. 10 also whole number, integer and rational number. Next one is commutative property. What do you mean by commutative? If any two number x and y are rational, whole as well as integers, means कोई भी दो नंबर चाहे वो रेशनल हो या होल हो या इंटीजर्स हो तो उनका जो सम आएगा यानी x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स ऑलवेज आर इक्वल, यानी उन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करने पर आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. वी गेट सेम आंसर व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर. फॉर एन एग्जांपल, 2/7 plus 1/4. We have not a same denominator. First we change the common denominator. सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं इनका डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे सेम डेनोमिनेटर में. So we find the LCM of 7 and 4. The LCM of 7 and 4 is 28. Then we divide 28 by 7. 28 से 7 को डिवाइड करेंगे. So we get answer is 4. 4 is multiplied by 2 as well as 2/7 plus 1/4. LCM of 7 and 4 equal to 28. We divide 28 by 7, we get 4, and we also divide 28 by 4, we get 7. In a first case, we multiply by number 4. First size number is multiplied by 4 and second number is multiplied by 1/7. Sorry. So we get 8/28 and 7/28. The sum of 8 and 7 equal to 15 and denominator is same. Similarly, 1/4 plus 2/7 equal to the LCM of 7 and 4 equal to 28. So we converting the same denominator. Number is 7/28 and 8/28. We add 8 and 7. So answer is 15/28. This is a property also whole number, integers. Next one is associative property. If x, y, z are any three rational number, then the sum of x plus y plus z and x plus in bracket y plus z are always same. This is a associativity property of rational number, whole number as well as integers. Means three rational numbers, whole numbers or integers
अगर किसी सेट में है और उनके साइंस को आपस में इंटरचेंज कर दें, उनके सेट्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज x इक्वल टू -3/4, y इक्वल टू -7/4 एंड z इक्वल टू -5/4 इक्वल टू -10/4 प्लस 5/4 इक्वल टू, we get a same denominator, so we subtract 10 minus 5 equal to -5 because the greater number will be 10. Similarly, x plus -3 plus in bracket -7/4 plus 5/4. In this case, in a bracket -7/4 plus 5/4. We get a same denominator, so we subtract the numerator of these number. So -7 plus 5 equal to, we solve, get -2/4 and -3/4 as it is. So next step, we add the both numerator because the denominator is same, and minus minus equal to plus. So if one number is negative and other is also negative and the mid sign is positive, so we get add the number. Add number but sign is negative, but sign is negative. Okay, next one is additive property of 0. This is also properties of integers as well as whole number. If x is a rational number, whole number and integer, we get then x plus 0 equal to x and 0 plus x equal to x. 0 is called additive identity of rational number as well as whole number. Next one is properties of additive inverse. What is additive inverse? If x is a rational number, then x plus in bracket minus x equal to minus x plus x equal to 0. So x is known as a additive inverse. अगर दो नंबर गिवन है, एक x एक minus x, so we add these number and result will be 0. So one number is, another is called additive inverse. Means जब दो नंबरों का सम 0 हो जाए तो उसमें से एक नंबर दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा. Similarly, the property is multiplication of rational number. Means product of rational number, the product of rational number equal to product of their numerator upon product of their denominator. These means p upon q and r upon s are two rational numbers, so we multiply p upon q multiply by r upon s, we get p into r upon q into s. Means 1 upon 2 multiply by 3 upon 4, we get 1 multiply by 3 upon 2 multiply by 4, so we get 3 upon 8. 3 1 ja 3 and 4 2 ja 8. Next is the properties of multiplication of rational number as well as addition, subtraction, commutative. So closure property, x and y are two rational number, then the product of there is also rational number. Means जब दो rational number को हम multiply करते हैं तो हमें फिर से क्या मिलता है, rational number ही मिलता है. Similarly, we multiply by integer and by integer, so
we get also integer, as well as we multiply by two whole number, we get a also whole number. Commutative property, the product of any two rational number is commutative. Commutative means x into y इक्वल टू y into x, यानी दो नंबरों को आपस में इंटरचेंज करने के बाद भी उनका मल्टीपल सेम मिलता है. सिमिलरली एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री नंबर, ठीक है, is associative. Associative means in the set of three number we change in the set, result will be same. तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें, तब भी वी गेट अ सेम रिजल्ट. रिजल्ट क्या मिलता है इस केस में, सेम मिलता है. इफ फॉर एन एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, so 2 3s are 6 multiply by 1 equal to 6. In case of this 1 multiply by 2 multiply by 3, we get 2 multiply by 3 equal to 6. So result will be same in this case and also this case. 6 is a result and this one is also result. Multiplicative identity, if x is any rational number then we multiply x by 1, and so 1 is a multiplicative identity. मीन्स ऐसा नंबर जिससे हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम रिजल्ट मिले. जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है किसी अदर नंबर से और रिजल्ट क्या विल बी सेम, दिस इज कॉल्ड multiplicative identity. The properties of multiplicative inverse, what do you mean by multiplicative inverse? When we multiply by two number, अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड रिजल्ट विल बी 1 और रिजल्ट कितना मिले, 1 मिले, देन one number of other number is called multiplicative inverse. In that case p upon q is a rational number, then we multiply p upon q multiply by q upon p, the result is 1. So q upon p is a multiplicative inverse, and we denote the multiplicative inverse p upon q inverse 1, yeah, p upon q to the power minus 1. This number is also denoted by p upon q. Distributive property, what do you mean by distributive property? The rational number hold distributive property. Distribute मतलब बांटना, ठीक है. This property also known as distributive property of multiplication over addition. Addition के रिस्पेक्ट में ही ये क्या है, multiplicative property है. So x multiply by in bracket y plus z equal to x multiply by x and y x multiply by z. For an example, in bracket 2 plus 3, this property is known as 2 multiply by 2 plus 2 multiply by 3 equal to 2 to the 4 plus 6. We add this number, we get 10 is our answer. This property is known as distributive property of multiplication over addition. Some other properties are division, so note down carefully. Thank you for watching this video. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें.